Sir, other point came up, and Kharge Saab very eloquently mentioned that high-speed railway. Sir, I want to first of all make one point clear. High-speed railway has many components. So we are trying to increase the speed of all railways operation. When we started Gatiman, nobody said that Gatiman is at the expense of other trains. When we are starting Humsafar or Tejas, it is not going to be at the expense of other trains. The idea is to increase average speed of all the trains. So how do you do it? When we move the traffic of goods from present tracks to dedicated freight corridor, capacity will increase. When we are investing this capital expenditure for removing bottlenecks, for augmenting capacity, for making signaling better, sir, I am telling you in 3 years, I know how my friends in UP and BR are suffering because the trains coming from Calcutta to Delhi, they all get delayed because they pass through one of the most congested network in the world, and therefore to decongest it, we need to invest money. So once all this happens, this will be actually increasing speed of those common people who are suffering today. And tell me, sir, we have never talked about bullet train, or we started it recently, but we are blamed for that. We not started. Why were common people suffering? Because of bullet train. If bullet train is the cause of problem, then why they were suffering even before bullet train was announced? So that means this is a completely independent project. This has nothing to do with the average person. In fact, that is our priority, to increase the speed of the train, please. So what we are doing is, we are definitely trying to increase the speed, average speed of all the trains, including passenger trains. We want to make sure that they travel in a much better way. That is our priority. Our priority, as the Prime Minister says, is the commonest of the common man, and we'll try to work for that. While we do this high-speed railway project, I thank the Honorable Prime Minister then, Manmohan Singh ji, who signed an MOU with the Japanese Prime Minister. And he said, we must start a high-speed railway in India. For that, they commissioned a feasibility study. So I must compliment your government for doing that. I think that time you must have taken into consideration the concerns of the common man. That's why you signed the MOU. And therefore, having signed it, our government came to power. We decided that we'll take this idea forward. We commissioned a study, and the study gave us a report. So this was a joint study by JICA and Indian government, which are talked about the feasibility of this project. Feasibility can be calculated on many counts: economic analysis, financial analysis, environmental analysis, social analysis. On all these parameters, they have concluded that this project will be viable if we finance it by a very low cost of interest. We must need a soft loan for this. How soft a loan can be? वो पूछते हैं ना कि मेरी साड़ी आपके साड़ी से कितनी सफेद है, तो इससे और अच्छा सॉफ्ट लोन क्या मिल सकता है, मुझे बताइए। सर, 50 साल का लोन, 15 साल में लोन रिपेमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1%। ये हमारी सरकार ने निगोशिएट किया, हमारी सरकार ने उसको लाया, हमारी सरकार उसकी चिंता करती है, इसके लिए हमने किया, और हमने सोच के किया कि देश के हित में है, क्योंकि वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सरकार भी देश के हित में नहीं होती तो साइन ही नहीं करती। तो इसके लिए मैं उसको विश्वास रखता हूं कि हमने इस तरह से उसको आगे लाने के लिए कर रहे। और मुझे मालूम है कि ये काम है, या जैसे माधोपुरा में प्रोजेक्ट बना तो कुछ लोगों का कहना हमने शुरुआत की। सर, वैसे तो देश की शुरुआत 1947 में हुई। उस समय भी हमने कहा था कि फ्रीडम एट मिडनाइट जब मिला तो हम वो देश को डेवलप देश बनाएंगे, लेकिन वो यदि बनता तो हमारे पास काम नहीं होता। बनना नहीं, इसके लिए बना रहे, कोशिश कर रहे, सबको साथ देना चाहिए। इसके लिए हमने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, यही हम कह रहे हैं। और इसके लिए सर, ये हाई स्पीड रेलवे के लिए हमने ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जा सकता है। सर, मैंने वो दिन एक पब्लिक इवेंट में, सर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पब्लिक इवेंट में मुझे एक ने पूछा यही सवाल, क्योंकि ये सब लोग पूछते, तो उसने पूछा कि ये जो 1 लाख करोड़ है और दूसरी जगह क्यों नहीं लगाते। तो सर, आपकी अनुमति से मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि एक लड़की का पिता कह रहा है कि मेरी लड़की से शादी कीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा। तो अभी लड़के ने सोचा कि 1 लाख वैसे मिलने वाला है, उसने तो कबूल किया है, वो दूसरे लड़के से जाके शादी करता है, तो क्या 1 लाख रुपया पिताजी देगा उसको? तो सर, 1 लाख करोड़ रुपए जो हमको मिलने वाला है, ये सिर्फ अलग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। ये 1 लाख करोड़ रुपए जो पैसा है वो सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए है, उसका सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल है, और उसका लाभ सिर्फ मुंबई अहमदाबाद के लोगों को नहीं होगा। सर, एक वैल्यू सिस्टम बनेगी, इको सिस्टम बनेगी, वो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी
वो टेक्नोलॉजी पूरे देश में रेल के विकास में काम में आएगी। और हमने जापान के साथ जो समझौता किया वो पहले नहीं था। हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे साथ में पूरे रेल का नेटवर्क डेवलप करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हमने ये बात की, उसके लिए उन्होंने इस बात को भी माना। हमने कहा उनकी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इस बात को भी उन्होंने माना। और मैं कहता हूं इसीलिए कि ये जो समझौता है ये सिर्फ बुलेट ट्रेन के सीमित नहीं है, इसका लाभ देश के पूरे रेल नेटवर्क को आगे लाने के लिए होगा। और इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी आएगी वो टेक्नोलॉजी पूरे देश के रेल के विकास में काम करने को काम में आएगी। मोहब्बत हमारे साथ, शादी जापान के साथ मत करो। मैं खड़गे साहब को धन्यवाद देता हूं कि इतना ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि सर वो अनुभव के आधार पर बोल रहे। खड़गे साहब ऐसा कभी नहीं बोलते। सर उनके समय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोन अपने सरकार ने अप्रूव किया, वो सर जापान से अप्रूव किया, और वो जापान से जो अप्रूव किया उसका जो इंटरेस्ट था वो इससे बहुत ज्यादा था और 50 साल का रिपेमेंट भी नहीं था। इसके लिए सर आपके आपत्ति यही है, उनका शादी हो चुका है जापान से, आप दोबारा उनके साथ जाके शादी करना चाहते हैं, इसलिए आपत्ति है। और सर खड़गे साहब इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके अनुभव के आधार पर ही हम सीख रहे हैं। और इसके लिए आपने जो शायद कुछ गलती की होगी, जैसे आपने कहा, वो मैं नहीं कहता हूं गलती की थी, लेकिन आपने मान रहे थे, तो उस गलती को दोबारा न बने इसके लिए हमने सब प्रयास कर रहा हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। एक तो ये पहला एग्रीमेंट होगा जिसमें जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी उनको पता है, खड़गे साहब को, कि नॉर्मली द जापानीज, दिस इज कॉल्ड ODA, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस. As you must be knowing the concept that ODA came about from rich countries, they are supposed to give at a very concessional rate of interest money to developing countries. We are the single largest recipient of ODA in the world from Japan, and therefore Japanese loans have been taken in the past. This is the first time we insisted that the prime contractors, the lead contractors, will be very limited as far as Japanese are concerned. The main lead contractors will be Indian. The second thing we insisted was that most of the things that will be done will be made in India, barring something, because if we have the technology, then no need to sign with Japan. So we cannot risk with the security and everything, but most of the things will be made in India. At least I want to confirm that figure, whether it's 75% or 85%, just because I don't want to give a wrong information. But the whole idea is that unprecedented level of major contractors will be from India, and therefore this will be really helping us. In fact, Japan will be importing only 13%. Sir, 13% only. Just imagine. This is the unprecedented agreement that we ever made, and I thank the Prime Minister because of his personal relations with Japanese Prime Minister and the respect that he enjoys globally. Sir, technology transfer for rolling stock and other critical items will happen in India. So just imagine, this is the best possible deal we could have got. In fact, I will tell you something. Some of the Japanese friends were saying that I don't know how India could get such a fantastic deal from Japan. So this is something we definitely take into consideration. But this is what I told you. So therefore, if you want, we'll definitely have a dispute. I am just saying is, for India is concerned, the best also, Madhepura and the other two projects that are coming up, the two companies, Mohora and Madhepura, both the projects, one is for electric locomotives, other is for diesel locomotives. State-of-art technology. The cost at which we got it is the lowest in the world. The technology is the best in the world. And that too, most 100% or more or less will be manufactured in Bihar. Not in any other place, but in Bihar, a state which needs industrialization. So this is all, and the benefit will also come to Orissa, this is an adjoining state, because it will go to Eastern India, the ecosystem will get developed. So sir, my request is that we definitely take into account all your concerns, all ideas, but what we are doing is the best interest of India.